हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ हार्ट फंक्शंस, द पंपिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। So you can see the branches here, here, here. So you are wondering how the blood is supplied to the part of the body. So this is not the full picture. I will show you how the full picture works. So this is the lower body part, and this is the upper body part. I can't draw neck, head, and shoulder, but please assume this. So it will make you visualize good. So here is L2, the lung 2. Here is the L1, the lung 1. Okay. So here blue one, the blue part donates the oxygen, sorry, deoxygenated blood. Okay. And the red part donates the oxygenated blood. So let's start. It's easy, just be focused. Okay. So how it starts, like, there are, let me first complete the picture. What happens, the blood from the lower extremities come through here, here and here, and then the chambers. This is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left atrium, and this is the left ventricle. Okay, so what happens? The blood first comes from the lower body parts to the right atrium. यहाँ से ये ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, ऐसे सेम ब्लड जो है ऊपर से राइट एट्रियम में आता है। सो आप इनको कहते क्या है? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द सुपीरियर, क्योंकि ये ऊपर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर। दिस पार्ट इज कॉल्ड inferior because ये नीचे है। ओके, सो inferior। सो जो पार्ट बहुत दूर से लेके आ रही है, जैसे कि नेक से, हेड से एंड शोल्डर से, यहाँ जो ये जो जगह है, ये नेक, हेड एंड शोल्डर से यहाँ से ये लेके आ रहा है। एंड दिस फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज, लाइक आपके पाँव से, आपके जो है वेस्ट एरिया से, एब्डोमेन से सारा ब्लड कलेक्ट करके इससे आ रहा है। अब इतनी दूर की डिस्टेंस कवर होगी तो ऑफ कोर्स ये जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द वेना कावा। दिस इज कॉल्ड वेना कावा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द वेना कावा। ओके, नाउ व्हाई वेना कावा तो है ये, बट वेना कावा के अलावा इनका कुछ और भी तो नाम होगा। सो दिस पार्ट, this all part is the inferior part, and this part is the superior part. That's why it's called the inferior vena cava, and this is called the superior vena cava. तो अब inferior vena cava and superior vena cava together empties the blood in right atrium. Here, this will take its part here, and this will take its part here, and they together empty the blood here in the right atrium. Then what happens? See, here is here is opening for the blood to enter in the right atrium. Now what happens? The blood from the right atrium goes to the right ventricle through tricuspid valves. This is called tricuspid valve. Why tricuspid? Because here is a thing named chorda tendineae. One,
2 and 3. What happens? This chorda tendineae which will stretch this wall so that the outflow of the blood from the right ventricle to the right atrium is restricted. ये इसको होल्ड करके रखता है थ्रू दिस थ्री स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाता है, एंड क्योंकि ये तीन है, तीन ने होल्ड करके रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। उसके बाद जो है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल जो ब्लड है वो थ्रू pulmonary artery, this is called pulmonary artery, and remember this is an exception। जनरली आर्टरीज जो है वो ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स ले जाती हैं, बट दिस आर्टरी विल कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड दिस विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, पल्मोनरी आर्टरी दिस विल कैरी deoxygenated blood from right ventricle to lung। ठीक है, अब ये लंग्स की देखो यहाँ पे ओपनिंग है, हियर एंड हियर। ठीक, अब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है टू यहाँ L2 एंड L1 में। ठीक है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर क्या है जो पल्मोनरी आर्टरी में? दीज आर कॉल्ड द सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व, जनरली आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाए जाते, बट इन पल्मोनरी आर्टरी देयर इज वॉल्व। व्हाई दिस वॉल्व इज हियर? टू प्रिवेंट द backflow from the pulmonary artery, backflow of the blood from pulmonary artery to the right ventricle। ये यहाँ से ब्लड का बैकफ्लो यहाँ होने में, राइट वेंट्रिकल में होने से बचाता है। दैट्स वाई ये होते हैं, ब्लड goes through pulmonary artery and this door or valve which is here will shut off to prevent the backflow of the blood to the right ventricle। उसके बाद ब्लड यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स को जाता है, और उसके बाद वापस लंग्स से ये ब्लड इस पैसेज के थ्रू, दिस पैसेज, दिस पैसेज, दिस पैसेज, सेम फ्रॉम हियर, दिस पैसेज, दिस पैसेज, दिस पैसेज, इस पैसेज के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे ब्लड जो है एम्प्टी होगा, एंड दिस पैसेज, द पैसेज थ्रू विच द blood is coming from lungs to heart is called pulmonary vein। okay, so pulmonary vein ये भी एक एक्सेप्शन है, pulmonary vein। जनरली वेन्स जो है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, बट हियर pulmonary vein is transporting the blood from the lungs to heart। so this will carry oxygenated blood because the blood is coming from lungs to heart। lungs, what is the function of lungs? To purify the blood है, because you see here in inferior vena cava and in superior vena cava, vena cava is part of the vein। okay, the greater vein is called the vena cava। what here happens, like from the lower body parts the blood was carried by the inferior vena cava। so lower body parts से heart तक blood जा रहा है, तो ये deoxygenated blood था, and same goes for the superior vena cava, but here the situation is different। so always remember कि जो arteries होती हैं वो oxygenated blood transport करती हैं from the heart to body parts, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है हार्ट टू लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगी, एंड पल्मोनरी वेन
Veins generally carries the deoxygenated blood, but here vein is carrying the oxygenated blood from lung to heart. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो नाउ द ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया. नाउ दिस विल पंप ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होगा ब्लड थ्रू bicuspid valve. This is bicuspid valve. This portion. This is bicuspid valve. Now why bicuspid valve? Bicuspid. Because the chorda tendineae which is present here, this will present here like a string and will attach to the bicuspid valve from two ends. Here the chorda tendineae was attached from three ends. That's why it's called tricuspid. But here it was attached from two ends. That's why it's called bicuspid. Okay, so the blood will pumped from the left atrium to the left ventricle. Now then, what happens? The blood from the left ventricle will pumped into the aorta. This is called the aorta. The greater arteries are called aorta. Now see what is happening. Here I told you a pulmonary artery is carrying deoxygenated from heart to lung. For what process? For the purification of the blood. But here aorta, a part of the artery, the greater artery is carrying the oxygenated blood to the part of the body. Okay, generally what happens, I told you before. Once again I will repeat later. So aorta is carrying the blood to the other body parts. So दिस इज द इनकम्प्लीट पिक्चर. सो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से ये निकलेगी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर देगी पूरी. एंड यहाँ पे आप तीन ब्रांचेस देख रहे हो, 1 2 3. दिस विल ट्रांसपोर्ट द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन, शोल्डर एंड नेक एरिया. Okay, so this is how the heart functions. So let's summarize this in short. What happens from the lower body parts? The blood will go to the right atrium through inferior vena cava. Now you will have a question, how the blood is pumped to the right atrium? So this is by the pressure. यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से प्रेशर लगेगा, ये this will squeeze. यहाँ से जब प्रेशर लगेगा, this will squeeze and the blood will pump to the right atrium. So right atrium में blood आया, then it will pass into the right ventricle through tricuspid valve. Why tricuspid? Because the chorda tendineae is attached in the three ends. Then after, from the right ventricle, the blood, this is deoxygenated blood. This deoxygenated blood will pumped into the pulmonary artery. There is semilunar valve. Semilunar valve, why? Because it will prevent the backflow of the blood from pulmonary artery to the right ventricle. Then it will pump into the lung. Here lung L2 and here is L1. Okay, so from the lung the blood then purifies and come back to the heart through the pulmonary vein. This is pulmonary vein, this is the pulmonary vein. And same from the L1 the blood is pumped into the heart. This is pulmonary vein through pulmonary vein. Now the blood from the lung will come into the left atrium. The pulmonary vein will empty the blood into the left atrium. Here is the left atrium. Now the blood from the left atrium will flows into the left ventricle through bicuspid valve. This is bicuspid valve. Why bicuspid? Because the chorda tendineae, this is chorda tendineae, these two structures. Because the chorda tendineae is attached from the bicuspid valve from the two ends. That's why it is called the bicuspid valve. Okay. What is the work of the bicuspid valve? It will prevent the backflow of the blood from the left ventricle to left atrium. Okay, now
The walls of the left ventricle are thicker than the left right ventricle. You see, right ventricle wall and left ventricle wall. That's because the left ventricle have to pump the blood all over the body. There should be a forceful pump so that the blood should reach till the end of the body part. That's why the wall of the left ventricle are thicker than the right ventricle. So now from the left ventricle the blood is pumped into the aorta. See, left ventricle pumping, the blood is going into the aorta. Now from through the aorta there are three branches which will pump the blood to the superior part of the body or upper part of the body to brain, shoulder and neck area, and then it goes downward here, it will arise here, and it will divide the or distribute the blood in the lower part of the body. Okay, now here from here at this point there is a tiny junction. You will see a tiny junction from here and here. Those junctions are for the transportation of the blood to the heart muscles, coronary artery. Those are called coronary artery. So that was the function of the heart.